Welcome to all. Today's topic is gonorrhea, which you are going to study in the third year of dentistry in general medicine. So first of all, we need to understand what is gonorrhea. Gonorrhea is basically a communicable sexually transmitted disease of humans caused by Neisseria gonorrhea, a gram-negative diplococcus. Its main characteristic is that it infects the mucous lining of urethra, cervix, pharynx, rectum, conjunctiva. Basically, the natural host of this infection is again human beings. The incubation period is found to be 2 to 10 days. This disease is found to be more common in homosexual than heterosexual, as this disease is mostly asymptomatic, but it may become symptomatic and the symptoms may appear in a person, but if a person avoids the symptom, then it will also consider as a carrier of the infection. इसके अलावा it includes the unmarried teenagers as well. So now it's important that we have to see and go through the clinical feature of this disease. Basically, the clinical feature of this disease includes, first of all, in case of male, the first symptom is dysuria, that is painful or difficulty in urination. The second one is the increased frequency of micturition with purulent discharge. Due to the infection of urethra, basically involve the anterior urethral infection. That's why this purulent discharge of urethra occur. Basically, if we examine the penis, it shows the edema and erythema of urethra in case of males. And this disease found to be more rigorous and become chronic, and which involve other areas too, like prostate gland, epididymis, periurethral area, and lead to more painful inflammation. In case of the clinical features of the females, it again lead to the first main feature, that is dysuria, vaginal discharge, rectal discomfort, and the abnormal menstrual bleeding. Sometimes the patient avoid or complain of less of the discomfort and remain undetected. In case of homosexual, the most common feature is the rectal infection, which is asymptomatic. And the pharyngeal infection is another feature which is found to be more common in both homosexual males as well as heterosexual too. But again, it is asymptomatic. अगर यही गोनोकोकल इन्फेक्शन बच्चों में हो जाए तो इसमें क्या होगा? गोनोकोकल इन्फेक्शन अगर किसी न्यूबॉर्न में हो जाए एट बर्थ, तो इट कैन लीड टू द हाई रिस्क ऑफ फेटल gonococcal infection, because there is lack of immunity in a child or in a baby due to or against this gonococcal infection. अब अगर ये severe हो जाए तो it can lead to further complications like we are going to study in the upcoming slides. फर्स्ट इसमें आता है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड आता है इन्वेस्टिगेशन का, हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और हैविंग द सेक्स विद द purulent discharge of the urethra of the male. Second one is the again ELISA, and third is same, that is the culture method. You can take up the sample of the purulent discharge or another sample you can take and do the culture method. So these are the three prime methods of investigation. Now, what will happen if this disease has crossed its limits? That means it regress more, or there is some heterogeneous expansion of this disease in the human body. It led to severe complications,
And a question may definitely come, what are the complications of gonorrhea? Basically, gonorrhea complications has been classified into two broad categories. First one is the systemic complications. The second one is the local complications. First we are going to talk about systemic complications. अगर इसने joints को involve किया है, then it can lead to arthritis. अगर इसने tendons of hand and feet को join किया है, then it can lead to tenosynovitis. अगर इसमें बाकी अगर हम देखें सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस तो थर्ड आता है बैक्टीरियमिया, प्लूरेंट इरप्शंस एंड पेरीहेपेटाइटिस. These are all the systemic complications of gonorrhea. Now, the next category of complication is local complications. Basically, अगर हम मेल्स की बात करें तो इसमें आता है पेरीयूरेथ्रल एब्सेस और पेरीयूरेथ्रल फिस्टुला. उसके अलावा लिंगुअल लिम्फेडेनाइटिस एंड द थर्ड वन इज जो इसमें हो सकता है दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पोस्ट्रेट ग्लैंड व्हिच वी हैव टॉक्ड अर्लियर आल्सो. उसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशंस में फीमेल्स की बात करें तो उसमें हो सकता है प्रीमेच्योर बर्थ, pelvic inflammation or the Bartholian abscess or disease to females. अब हमने इसकी complications पढ़ ली. Now the next topic is the treatment of this disease. जैसा कि मैंने कहा कि एक bacterial disease है, so for any bacterial disease a single dose of antimicrobial is sufficient. अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंसिटिव गोनोकोकल इन्फेक्शन है तो उसमें हम पहले देंगे ओरल अमॉक्सिसिलिन 2 to 3 ग्राम. उसके अलावा हम कॉट्रिमॉक्सासोल देंगे, बेसिकली 8 टैबलेट्स जो 480 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक होगी. उसके अलावा हम एक इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ पेनिसिलिन देंगे, बेसिकली 2.4 ग्राम्स का, अलॉन्ग विद फिनोबैसिनेटिक एसिड जो कि 1 ग्राम का होता है. अगर कभी हमारे पास कोई भी ऐसी गोनोकोकल इन्फेक्शन हो जो कि किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आई है तो उस केस में हम बेसिकली देंगे एक्वस क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जी जो कि 10 मिलियन यूनिट्स की होगी, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी हम दे सकते हैं 500 mg 5 days and 2 times in a day. तो हम ये चीज कंटिन्यू कर सकते हैं. उसके अलावा अगर कोई पर्सन रेजिस्टेंट है पेनिसिलिन से तो बाकी ड्रग्स बता रखे हैं कि आप उसमें स्ट्रिप्टिनोमाइसिन दे सकते हैं, सिफेट्रैक्सोन दे सकते हैं, और उनकी डोजेस भी आपको स्लाइड्स में दिखा रखी है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द सेशन वेरी वेल. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज ईच एवरी लाइक मैटर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.